बच्चों, let's see this question. The question says PtCl2 P1 ATM HCl 0.1 molar and Cl2 P2 ATM PT cell reaction will be spontaneous if the options are P1 is equal to P2, P1 is greater than P2, option number C P2 is greater than P1 and option number D P1 is equal to P2 is equal to 1 ATM. So इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें बताना है कि सेल रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. सो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन is if EMF of cell is positive, then the cell reaction will be spontaneous, and EMF of the cell is negative, then the cell reaction will be non-spontaneous. Now सेल रिएक्शन जो हमें दी गई है वो क्या है, PtCl2 and Cl minus, the second side Cl minus and PtCl2. This is at pressure P2. Concentration of Cl is 0.1 molar. Here also 0.1 molar, and this is at pressure P1. From here we can write left hand side 2Cl minus gives Cl2 plus 2 electron at pressure P1. On right hand side Cl2 at pressure P2 gain 2 electron to form 2 Cl minus. Now according to Nernst equation, that is E is equal to E naught minus 0.059 1 upon N log Q. As concentration of chloride is same, दोनों साइड क्लोराइड की concentration same है, as concentration of chloride CHLO chloride is same on both side. तो जो ये नर्स्ट इक्वेशन होगी वो क्या होगी, E सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन 2, 2 इलेक्ट्रॉन का इंटरचेंज हो रहा था, लॉग प्रेशर ऑफ Cl2 in right hand side upon pressure of Cl2 in left hand side. और हमने क्या बोला कि अगर रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है, तो जो E सेल होना चाहिए वो मोर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए. देयरफॉर E सेल पॉजिटिव कब आएगा, जब P2 की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन P1 होगी. So the final answer to this question, option number C, that is P2 is greater than P1. I hope you understood it well. Best of luck.